also which kind of design you are following, because you are following different designs. I am sure that no two designs are same. कोई टेस्ट डिजाइन में काम करता है, कोई एक्सपेरिमेंट में करेगा, कोई क्वाजी एक्सपेरिमेंट में करेगा, कोई पार्टिसिपेटरी अप्रेजल में काम करेगा, कोई एक्शन रिसर्च करेगा. I mean, different kinds of designs are available. By the way, suppose how many of you are doing experiments in your very few, I guess. I mean, social sciences में experiments बहुत कम करते हैं. Any one of you are doing experiments? Yes. What kind of experiment you have been doing? Sir, I'm working on false memories, so basically I use the DRM paradigm. A paradigm or model is a different thing, but you are working on false memory. I mean, what kind of memory? Flashback memory? No, sir, autobiographical memories. Autobiographical memory. Why do you call it as an experiment? What is the difference between test and experiment? कौन बता पाए? I'm not asking a question. Because this question, answer could not be given. अभी हम पेंसिल्वेनिया में पढ़ा रहे तो वहाँ भी बच्चे नहीं दे पाए. What is the difference between experiment and a test? Cause and effect. Sir, in experiment we actually manipulate independent variables. And test में? We don't actually manipulate anything. Measure the It's already dispositions there. of We are persons just measuring. और dispositions measure करते हैं सर टेस्ट में. We don't actually manipulate. It is there. So you manipulate in test? No, we No, sir. manipulate in Manipulation experiment. in the experiment. Okay. So suppose I want to do a span of attention to it. I want to do a study, and I want to know what is his span of memory and what is his span of memory. Is it a test or experiment? It's a test. It's a test. The difference again. The house is now divided. The fundamental difference is experiment we see to see the similarities between them, and in test we try to see the difference between them. The simplest possible formula. हम जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो क्यों कराते हैं? I want to see what is my blood sugar level as opposed to a standard level. So what is the difference between my blood sugar level and the standard blood sugar level? बट जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देखते हैं कि ब्लड शुगर लेवल, जनरल ब्लड शुगर लेवल पॉपुलेशन में कैसा है. So I try to see what is the general propositions, general findings, general observations in the population. So attention pay, let us take the example of attention. If I want to see what is the average span of attention in an individual, in the individual or in persons, then I will do an experiment. But if I want to see what is the difference between you two in span of attention, then it becomes a test. And sir, on the basis of independent variable, how can we differentiate between test and experiment? The independent and dependent variable is a different issue. Independent variable is the cause, dependent variable is the outcome. Okay. So when you try to see the effect of cause and effect, it becomes experiment. So you should have two groups, one variable. Okay. But when we see test, we follow a correlational design. You have got two variables, one group. But my point, I cannot see the correlation between height and weight in two groups of individuals. Can I do this? I can't do this. Height and weight के बीच में अगर correlation कर तो हमें एक ही set of individual लेना पड़ेगा. So I will test 10 people's height, 10 the same 10 people's weight. Then only I can do correlation.
So whenever we follow a correlational design, we follow a test approach. And whenever we do an experimental paradigm, we try to see a difference approach. So one is a relational approach, one is a difference approach. So when we see the difference, it's a difference between two sets of groups. Or when it is a relational approach, it's the two attributes or traits of a single set of individuals. Is it now clear? तो हम लोग ज्यादातर कोरिलेशनल स्टडी करते हैं या एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं? अब तो क्लियर हुआ होगा. Anybody is doing then experimental work जिसमें कि you directly manipulate the variable. You are not directly manipulating the variable, but you can still consider it as experimental if you follow it in a quasi-experimental research, where independent variable is stratified on the basis of certain tests. You stratify them and then you push them to experimental design. So it becomes a quasi-experimental design. So when we do test, it becomes a pure correlational design. When we see the effect of independent variable or dependent variable purely, where the independent variable you can clearly manipulate, it becomes an experimental design. And when you stratify the group on the basis of a test, like हम देखना चाहते हैं कि personality and performance, okay. Personality and performance, I mean academic performance. So personality, if I have to divide them as independent or dependent variable, I have to utilize a test. I'll stratify them first and then see the difference whether introvert and extrovert significantly differ or not. Got my point? So it becomes a quasi-experimental design. So fundamentally we are dealing with test and experiment. Either we follow a correlational design or we follow a experimental design. ये ABCD है, ठीक है? Okay, next. I'll not go through this. These are the specific steps. You all know this. Huh? You all know this. I'm not going into great detail of it. Next. I mean, this is just a template. This template will follow for any design. एक बार देख लो. Next, this is important. Now, any study that we do, any research that we do, can be divided into three parts. इसकी एक application होनी चाहिए, इसकी एक objective होनी चाहिए, और what kind of information I am asking for, looking for. Morning में जो हम लोग discuss किए, application it may be a pure research or a applied research. Or it may be a pure research, or a applied research, or a translational research, or a production research, or a user integration research. सब तो minor elements है. Crude element यही है कि whether it is a basic research or a applied research. ठीक है? इसके बाद आता है इसके objective क्या है? Whether I am doing an explorative research. देखो research also fundamentally can be एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लैनेटरी. आप लोगों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सब दे के जा रहा हूँ मैं, आप ही लोगों के लिए बनाया है, ठीक है? आप बल्कि सुन लो, अच्छा रहेगा. हाँ, तो if you can answer my questions or if we can discuss, it would be better because I'll give you everything. तो either it is explanatory or exploratory. ये दोनों सब में क्या डिफरेंस है? Exploratory and explanatory. अगर कोई भी रिसर्च डिवाइड देख लो, इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं. ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है और एक्सप्लैनेटरी रिसर्च. So in exploratory researches, we are actually discovering new Very good. facts, hidden facts, and in the explanatory researches, we get Exploratory means there is no knowledge to new knowledge. Yes. Explanatory means So the second thing, that is what is already known. we are explaining this We are trying to explain it.
on the basis of my sample, my context, my variable, whatever. But actually objective चार तरह का हो सकता है. I can explore, I can describe, I can try to find relationship, or I can find the explanation, that is explanatory. अब अपना अपना रिसर्च सब देख लो किस कैटेगरी. डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी में क्या डिफरेंस है? हाँ, डिस्क्रिप्टिव में जैसे डिस्क्रिप्टिव हुए मेरे क्लास में मान लो 5 स्टूडेंट, ठीक है, और 5 में से 4 को 0 मिला, 1 को 25 मिला, मैं डिस्क्राइब करके छोड़ दिया. अब क्वेश्चन पेपर टफ था कि नहीं, हमें सैंपल से पॉपुलेशन तक जाना है, तो हमें एक्सप्लेनेशन करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च का जो फंडामेंटल है वो फंडामेंटल है डिस्क्रिप्शन, एलाबोरेशन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल एंड फाइनली प्रेडिक्शन. ठीक है, तो my purpose, if my purpose is simply to describe this class, I will not go beyond that. But if my purpose is to describe what is the average height of Allahabad University student, and if I want to use you as a sample, then I will go from sample to population. If I go from sample to population, then it becomes explanation. But if I only describe the sample, so it becomes descriptive. So mean, median and mode, average deviation, standard deviation, quartile deviation, range are all description of a population. Okay. These statistics are used only to describe the population. But description is different from inference. Inference we do from sample to population. And then the kind of data I am getting, it may be quantitative, it may be qualitative. तो ये जो स्ट्रक्चर है आपके सामने, this आपको अगर इंटरव्यू देनी है कभी भी एक्सप्लेन करना है, never try to utilize the jargons of your thesis in front of anyone, either belonging to your subject or not belonging to your subject. How simply you can talk about your work, what is the contemporariness and what is the surprise element and what is the deliverable out of your thesis is something what people are interested in knowing. Nobody wants to know what kind of psychological jargons you are using. Jargons are detrimental to performance of your performance at any point of time. Any point of time. I would strongly recommend you to listen to some of the TED Talks of notable lawyers. They only tell stories. They don't go beyond stories. How it is possible? Because they can reach to the level of a very young child who doesn't belong to even chemistry or physics or biological sciences. They can reach up to that level and then tell that this is what is my work. Okay, so given that, this template must be with you, that I am doing a applied research or directed basic research or basic research or a translational research or a developmental research or a end user integration research. Number one. And number two, I am following a design which is either exploratory or descriptive or observational or explanatory. And my database belongs are either to qualitative or to quantitative. This is the format for doing all kinds of research.
पास तो इंस्ट्रूमेंट भी है ना. ओके, सो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ना, रिसर्च का पर्पस होता है टू डिस्क्राइब, टू प्रेडिक्ट, टू एक्सप्लेन, टू कंट्रोल एंड टू अप्लाई. So whenever people ask you what kind of research you have done, whether you have restricted yourself to description or you have restricted yourself to prediction, whether you are explaining those things, what is the difference between prediction and inference? इस साइकोलॉजी में हम लोग ना बहुत वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. So many constructs we use it interchangeably. This is one problem. So prediction is a priori, inference is post hoc. Is it in that sense? So we predict on the basis of the inferences we make. No. देखो लिटरेचर में भी बहुत क्लियर आइडिया नहीं है. प्रेडिक्शन इज टाइम बेस्ड होता है prediction. प्रेडिक्शन के बेसिस पे जो है ना, इसको देखो, I do not know whether I have got that table or not. I'll come back to you. Probably I do not have. वैसे हम बता देंगे आपको. ठीक है, नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ. देखो रिसर्च जो हम लोग करते हैं ना, रिसर्च के 6 स्टेप्स है. स्ट्रेटेजी, ह्यूरिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स, टैक्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कम्युनिकेशन. ये स्टेप्स. मैंने आपकी व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च यू आर डूइंग. स्ट्रेटेजी क्या है? आप एक्सपेरिमेंट करोगे या रिलेशनशिप देखोगे. तो स्ट्रेटेजी आपका अगर ऑब्जर्वेशनल है, स्ट्रेटेजी में भी आपका एक्सप्लेनेटरी है, स्ट्रेटेजी में भी एक्सप्लोरेटरी है. व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी? उसके बाद आता है ह्यूरिस्टिक्स. ह्यूरिस्टिक्स माने द आर्ट एंड साइंस ऑफ सर्विंग लिटरेचर, जो मॉडर्न में हम लोगों ने पढ़ा, और उससे जो हाइपोथेसिस को डिराइव करके एक प्रेडिक्टिव ऑब्जेक्टिव हम बनाते हैं. ठीक है. अब उस प्रेडिक्शन को हम इन्फरेंस तक ले जाते हैं बाय आइदर टेस्टिंग और बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट. ठीक है. सो शुरू में तो हम ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्व तो सैंपल को ऑब्जर्व ही ना करते, डिस्क्राइब ही ना करते. डिस्क्रिप्शन अगर हुआ तो उसके बाद हम उसको प्रेडिक्ट करेंगे. प्रेडिक्शन अगर हम कर पाए तो हम उसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी. तो एनी रिसर्च दैट वी डू, उसका अगर कोई थियोरेटिकल बेस नहीं है तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. None of us do theoretical research. Any of us doing theoretical research? Theoretical माने जिसमें कोई थ्योरी नहीं है. आप एक बार सोच लो, थीसिस को लिखते समय many theses get rejected माने commented upon, कि आप थियोरेटिकल जो व्यू पॉइंट है उसको आइदर नलिफाई करो और सब्सटेंशिएट करो, और सरप्राइज एलिमेंट ऑफ मॉर्निंग में ये भी हम लोगों ने डिस्कस की. तो थियोरेटिकल जो बेस है, वो थियोरेटिकल बेस आपका जो सैंपल आपने डिराइव किया और जो डेटा आपने कलेक्ट किया, उस डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक थियोरेटिकल बेस होगी. तो इसलिए मैंने कहा नो नॉलेज टू न्यू नॉलेज, न्यू नॉलेज टू थ्योरी बिल्डिंग, थ्योरी बिल्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ एप्लीकेशन. है ना. तो जब तक आप थ्योरी आपके सामने नहीं है तो उस डेटा को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे. अगर आप एक्सप्लेन कर दिए तो उसके बाद आप चाहोगे कि इस डेटा के बेसिस पे सैंपल कैरेक्टरिस्टिक को हम कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे आपने कहा कि अनरूली बिहेवियर कैन कॉज मॉब हिस्टीरिया. आपने इसको एस्टैब्लिश कर दिया. मेरे को ये काम करना पड़ा 26/11 में जो भी बम्बई कांड हुआ था, उसमें मेरे को करना पड़ा. देयर वाज अ मॉब हिस्टीरिया, पर दिखता नहीं था कहीं. मॉब हिस्टीरिया जो है कहीं नहीं दिखता था. वो मॉब हिस्टीरिया हमने डिफाइन किया थ्रू कलेक्टिव व्हिस्परिंग and collaborative lies. Everybody was telling lies.
but nobody was speaking to anybody. कलेक्टिव व्हिस्परिंग माने आप सब लोग एक तरह से सोचते हो, कुछ ना कुछ सोचते हो, पर कोई किसी से बातचीत नहीं करता, है ना? तो कलेक्टिव व्हिस्परिंग एंड कोलैबोरेटिव लाइज के बेसिस पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया, और एक्सप्लेन करने के बाद मेरे को लगा कि अगर क्या मेरे को वो तो ये एक्सप्लेन करने के बाद मैंने उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश की कि ये कोलैबोरेटिव लाइफ को यदि ब्रेक कर दिया जाए, होता ये है ना कि हिस्टीरिया मॉब हिस्टीरिया हो जाता है, एक झूठ बोलते हैं तो दूसरा भी ना बिना सोच समझ के वही झूठ को अपना लेते हैं, और इसके बाद सब लोग झूठ बोलते हैं। एक्चुअली सब झूठ बोलते हैं, कोई भी जानबूझ के नहीं झूठ बोल रहा है, सब इसी को सच मानते हैं, और हिस्टीरिया इस तरह से डेवलप कर जाता है। तो मेरे को अगर हमको ये चीज जब साबित करनी होती, मैंने साबित किया, और उसके बाद हमें उसे कंट्रोल करना पड़ा कि हम इसे, अगर ये फैक्ट है तो हम इसे कंट्रोल कैसे करें, तो वो इम्पोर्टेंट बन गया, कंट्रोल कैसे करें। अब कंट्रोल करने के बाद फाइनली आपको उसे अप्लाई करना पड़ेगा कि हाँ, कंट्रोल करके हम दिखा दिए कि एक क्लासरूम में कलेक्टिव व्हिस्परिंग एंड कोलैबोरेटिव लाइज करके हम शो कर दिए कि ठीक है, हिस्टीरिया को जनरेट किया जा सकता है, तब हम उसको अप्लाई कर सकते हैं पॉलिसी में। देखो, रिसर्च जो आप करते हो ना, रिसर्च तो आप यहाँ तक करते हो, कंट्रोल तक करते हो, एप्लीकेशन तो पॉलिसी में रिसर्च है, एप्लीकेशन तो कोई और करेगा, आप तो नहीं करोगे ना, आप तो थीसिस करोगे। तो रिसर्च का जो फंडामेंटल है ये बताना चाहिए। आप जब कभी भी अपना थीसिस को प्रेजेंट करो किसी को, बता दो कि आप इस स्टेज को कैसे फॉलो किए, ठीक है? अब देखो, ऐसा है ना, हम स्लाइड बाय स्लाइड आपको नहीं समझाएंगे, कि आपका काम है और पढ़ के आपको कल बताना है। इतने सारे डिजाइन हम आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, ठीक है? तो आई शो यू, पहले हम आपको शो कर देते हैं कि सोशल साइंसेस में किस तरह की डिजाइन से अप्लाई किया जाता है, क्योंकि अभी आपको एग्जाम लिखना तो नहीं है कि एक एक स्लाइड देख देना कि आपको समझाएं कि ये क्या है वो क्या है। आप देख लो, देखने के बाद डिस्कस करो, बोलो कि इसको कौन से डिजाइन, आपने कौन सा डिजाइन आइडिया किया है और एक्सेप्ट किया है, और क्यों एक्सेप्ट किए हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो देखो, डिस्क्रिप्टिव डिजाइन सबसे पहले है, उसके बाद एक्सप्लोरेटरी डिजाइन है, उसके बाद कोरिलेशनल डिजाइन है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, उसके बाद हिस्टोरिकल डिजाइन है, एक्शन रिसर्च है, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन है, लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन है, कोहर्ट डिजाइन है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजाइन हम लोग यूज करते हैं। तो एक एक करके आई शो यू ऑल दिस डिजाइन, और किसी भी डिजाइन को आपको अगर डिस्कस करना है तो मेरे को बताओ। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव डिजाइन। डिस्क्रिप्टिव डिजाइन का मतलब आप डिस्क्राइब करते हो। अगर आप डिस्क्रिप्टिव डिजाइन को फॉलो कर रहे हो तो क्वांटिटेटिव रिसर्च करना मुश्किल है, जनरली हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, ठीक है? और ये सारा टेक्निक है। एक एग्जांपल, जैसे सर्वे करते हैं, सर्वे इज ए डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, केस स्टडी इज ए डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च इज ए डिस्क्रिप्टिव डिजाइन। आप खाली डिस्क्राइब करते हो, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं करते। पर अगर हम डिस्क्रिप्टिव डिजाइन में इन्फर करने लगे और बताने लगे कि इसका प्रिंसिपल्स ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, तो विल मेक ए मेजर मिस्टेक in conducting a thesis.
पर्पस है डिस्क्रिप्टिव डिजाइन का व्हाट एग्जिस्ट्स। हम कोई एक एग्जांपल देते हैं, अगर हमें मॉब हिस्टीरिया देखनी है, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, स्टैम्पिड देखते हैं कि स्टैम्पिड में इतने मैं एक एग्जांपल और देता हूं। मैंने देखा स्टैम्पिड बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च था वो। स्टैम्पिड का मेन पर्पस है हॉरिजॉन्टल पुशिंग, वर्टिकल स्टैकिंग, माने एक दूसरे को पुश करते हैं हम लोग स्टैम्पिड जब होता है, और हॉरिजॉन्टली स्टैक कर जाते हैं। और इसलिए स्टैक करते हैं कि हम बाएं हाथ से पुश करते हैं, राइट हैंड से नहीं करते। आप ये पूछोगे कि भाई इस डिस्क्रिप्शन से क्या मिला, जब इसको हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया तो देखें कि बाएं हाथ से हम लोग इसलिए पुश करते हैं कि लेफ्ट हैंड इज आवर प्रोटेक्टिव हैंड, राइट हैंड इज आवर फंक्शनल हैंड। इसलिए देखो मदर ऑलवेज क्रैडल बेबी इन देयर लेफ्ट हैंड, आपने नोटिस किया? व्हाई? क्योंकि मदर कैन बेस्ट प्रोटेक्ट द चाइल्ड विद द लेफ्ट हैंड। लड़ते समय लेफ्ट हैंड में हम शील्ड रखते हैं, राइट हैंड में शोल्ड रखते हैं, आपने नोटिस किया? तो जब लेफ्ट हैंड को हम प्रोटेक्ट माने को अगर हम पुश करना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड से पुश करते हैं अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेफ्ट हैंड से जब प्रोटेक्ट करते हैं तो यहाँ के जो रिब है ये टूट जाता है, और टूटने पे ये हार्ट को स्टॉप कर देता है। इसलिए अगर आप राइट हैंड से पुश करो प्रेशर ज्यादा डाल पाओगे, और इधर कुछ नहीं है, सब टूट टाट जाएगा, फिर भी बच जाओगे। मगर यहाँ एक रिब अगर टूट जाए तो हार्ट विल स्टॉप। तो देखो रिसर्च सोशल साइंस का रिसर्च हमने डिस्क्राइब ही तो किया कि कैसे हुआ ये। हमारे देश में जैसे दिल्ली स्टेशन में स्टैम्पेड हुई, उसका एक ही कारण है, एक बंदा जो है was coming from opposite direction of the crowd, और वो एक्चुअली एक सीढ़ी जो है दिखता नहीं है भीड़ में ना, एक सीढ़ी जो है मिस किया, वो गिरा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, सब एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। तो अब उसके बाद पुलिस कंट्रोल में, चूंकि हम पुलिस प्रोटेक्शन को ट्रेनिंग देते हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, तो लोगों को बताते हैं कि भीड़ को कंट्रोल कैसे करना चाहिए। कौन देता है? साइकोलॉजिस्ट वाले करते हैं। तो सुबह जॉब के लिए कह रहे थे, हर एक पुलिस सर्विसेज में, हर एक पैरामिलिट्री सर्विसेज में, हर एक मिलिट्री सर्विसेज में साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती, सब में पोस्ट है और हम कोई अप्लाई नहीं करते। तो डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, this is observational design. Observational design is a design जिसमें आपका काम होता है खाली आप ऑब्जर्व ही करते हैं, you simply look it at, और कुछ नहीं, okay, and you can directly see, you can indirectly see, but that itself is a design. बट ये ओपन एंडेड नहीं, आप टाइम सैंपल करके देखते हो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन। तो जैसे हम लोग डिसेप्शन स्टडी करते हैं, तो डिसेप्शन आप स्टडी वैसे नहीं कर पाओगे, कोई झूठ बोल रहा है, इसके लिए एनालिसिस जो है या ऑब्जर्वेशनल डिजाइन आपको फॉलो करना पड़ता है। आप देखते हो कि बिकॉज साइकोलॉजिकली हमें पता है कि यू कैन नॉट डिसीव बाय योर फेस, बाय योर वर्ड साइमल्टेनियसली, यू कैन डू आइदर वन। तो हम वो इनकॉन्ग्रुएंस की इंडेक्स देखते हैं कि जब आप झूठ बोलते हो तो फेस चेंज करता है। तो इट्स नॉट फिजिकली पॉसिबल
to actually manipulate both what he was saying and how he was saying. बच्चे इसलिए पकड़ में आ जाते हैं. I mean, children when they tell lies, हमेशा पकड़ में आ जाते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो. तो जैसे किसी से मैंने एक सवाल पूछा, मैं पूछा भाई नाम क्या है बताओ, तो वो सर खुजलाने लगते हैं. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इधर खुजलाते हैं. तो कौन झूठ बोल रहा है? जो पीछे से है. क्यों? ठीक बोला तुमने. रीजन बता दे कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें है बट हम नहीं जानते क्यों. इसलिए कि यहाँ कोई मेमोरी सेंटर है ही नहीं. फ्रंटल लोब इधर है, इधर कोई मेमोरी सेंटर नहीं है. ये तो खाली ऑक्सीपिटल लोब है. ऑक्सीपिटल लोब देखने के लिए है. ऑक्सीपिटल लोब तो मेमोरी के लिए नहीं है. तो आप यहाँ समझ जाते हो. ठीक है. तो कौन झूठ बोल रहा है? ये देयर आर बिहेवियर मार्कर्स. तो साइकोलॉजी में हम लोग खाली साइकोमेट्री नहीं करते हैं, बिहेवियोमेट्री भी करते हैं. बिहेवियोमेट्री करते हैं इसको. ठीक है. तो ये पॉसिबल है थ्रू ऑब्जर्वेशनल डिजाइन. जैसे ऑटिस्टिक बच्चों को हम लोग डायग्नोसिस करते हैं. ऑटिस्टिक बच्चों को हम लोग ऑब्जर्वेशनल डिजाइन के थ्रू एस्पर्गर सिंड्रोम के बारे में सुना है आप लोगों ने? एस्पर्गर सिंड्रोम. High functioning autistic. Pardon? Is it high functioning autistic? Not high functioning. It's a variant of autism found in very early childhood. I can once again give one of my job that I did is in Japan. Don't mind if I'm giving my examples because मेरे को 40 साल हो गया है ना. तो कई तरह का रिसर्च हमने किया है, कई तरह का. तो जो जिसमें सूट करता है वही मैं लगाता हूँ. तो जापान में एक रिसर्च करने के लिए मेरे को बोला गया कि जो एस्पर्गर सिंड्रोम के बच्चे हैं उनको अगर हमें 2 साल से पहले डायग्नोसिस करना हम कैसे कर सकते. क्योंकि इनका पर्पस क्या था? पर्पस ड्रिवन जाओ. पर्पस ये था कि अगर हम 2 साल से पहले इनको डायग्नोस कर लें तो ट्रीटमेंट वुड बी मच बेटर. बट क्वेश्चन ये है कि 2 साल से पहले कैसे कर सकते हैं. तो बिहेवियोमेट्री की, हम लोग साइकोमेट्री तो कर नहीं सकते. अब बिहेवियोमेट्री में क्या किया हम लोगों ने? ये पाया कि 2 साल के नीचे जो एस्पर्गर सिंड्रोम के बच्चे हैं, the child doesn't see his or her mother. Eye contact they don't maintain. ठीक है. Is it possible to test or experiment? It's not possible. So under such circumstance, we will do only observational. And आपको hours after hours आपको वीडियो क्लिप देखनी होती है, सीसीटीवी फुटेज देखना होता है. And उसके थ्रू आप finally detect करते हो कि how many times the child actually look into their mothers. So eye contact is a marker through which you can identify whether the child belongs to the Asperger's group or a autistic group. I mean, this is just one example. Observational study हम लोग केस कंट्रोल स्टडी में भी करते हैं, कोहर्ट डिजाइन में भी करते हैं. केस कंट्रोल स्टडी देखो ऐसा है ना. आई मीन पहले बताओ कि whether you follow it or not. If you can, any one of you can tell me, it's fine. Otherwise, I'll go ahead. What could this be? ये एरो को जरा फॉलो करो. एरो ये Sir, it's not visible. Sir, it is not visible. oh, it's not visible ना.
it can't be enlarged, no? नहीं सर लार्ज थोड़ा सा जूम करो अभी पीछे जाके उसका font बढ़ाओ। पीपीटी इसको जूम करो स्लाइड शो से हटाओ यहाँ से नीचे से नीचे से कर दो और हाँ यहाँ से पर्टिकुलर स्लाइड में इसको पढ़ लो नहीं हो पाएगा इससे। कैसे लेफ्ट साइड को पहले दिखा दो। हाँ, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर करो। ये केस कंट्रोल स्टडी है, ठीक है, और एक है कोहॉर्ट स्टडी। थोड़ा सा ऊपर कर दो। देखो, आई वांट थोड़ा सा नीचे कर लो यार। और थोड़ा नीचे। You know, carpenters, when they use saw, the dust of the wood actually creates some kind of problem in their lung. So lung cancer, whether it is being caused by carpentry as a profession or not, that was to be examined. So a study में the comparison group was that you have a group of carpenters and you have a group of non-carpenters. You found within 6, 3 people have developed lung cancer, and non-carpenter may found that in a similar kind of sample you find only 1 as having lung cancer. Then you have gone back to their profession. We are doing an observational study only, and you found that they were all carpenters. And in the non-carpenter group, you find that there is no such effect on their lung. Idea क्या है कि those who are showing some symptom of a particular disease, cancer for example, like a person doing cancer research, after seeing that there is cancer, I want to know what is the principal reason for which the cancer has developed. So you have the dependent measure first. Okay. I mean, in that sense, the outcome measure first. Outcome measure से आप जाना चाहते हो कि जो criterion measure है उसको देखना। तो when you have such kind of design, it is called case controlled design. You can also do the reverse way, cohort design. Left side में आ जाओ, next side में, this side. This is called cohort. Cohort माने बस करिए. Cohort माने you understand cohort. I mean, you people in that way are cohort. Those who were born in one particular year, or those who belong to one particular class, they are called cohorts. So you have got cohorts, and you found that you have a cohort who are all smoker. And how many of them developed cancer? 3 of them developed cancer. इसमें देखो डिजाइन को फॉलो करते हो, I mean, उसमें क्या आप पास्ट को जाते हो और इसमें फ्यूचर को देखते हो कि those who are smoking after 10 years what will happen to them. So you found those who are non-smokers, only 1 developed cancer. So these are all observational design. आप कुछ नहीं कंट्रोल करते हो. You don't control anything. If you do it through case control study, you will go into the past. If you are doing cohort design, then you go into the future. And these studies cannot be generally done in a PhD topic because such a long time nobody would wait 10 years, 15 years. But people have been doing. People have been doing such kind of research, not necessarily the PhD scholars. Other forms of researchers are also doing. Next slide.
तो आप स्मॉल कर दीजिए. Now you know experimental design. You understand what experimental design is all about. Experimental design, I mean, you talked about what which kind of false memory you talked about. Suppose I want to test effect of caffeine on memory, and I can do an experiment. Okay. And why this could be a good experiment? Because you can control the amount of caffeine that is been consumed by the experimental group. ठीक है? तो if I have to do this experiment, what I will do? आपको अगर ये experiment करना है कि कैफीन या चाय या कैफीन के ऊपर जैसे एग्जाम के पहले लोग खूब कॉफी पीते हैं to stay alert, isn't that? बट इस एक्सपेरिमेंट को अगर करना है तो हम क्या करेंगे? कुछ एक एनीबॉडी कैन टेल. एक ग्रुप को देंगे कैफीन और Very good. एक को कैफीन देंगे नहीं बट उन्हें प्लेसिबो कॉफी विदाउट कैफीन और एक को कॉफी नहीं देंगे. वो है. अच्छा ये भी, मगर सपोज हम ये भी देखना चाहें कि हाउ मच कैफीन इज इम्पोर्टेंट फॉर मेमोरी, तब क्या करेंगे? तो 5 mg 10 mg 15 mg, तो एक को कॉफी देंगे 5 mg, एक को 10 mg देंगे, एक को 15 mg देंगे, एक को कॉफी विदाउट कैफीन देंगे और एक को नो कॉफी. इसके साथ हम ये भी देखना चाहेंगे कि कॉफी अगर 10 mg मान लो हमको पता चल गया कि थ्रेशोल्ड है 10 mg में अलॉटमेंट बढ़ गई है, तो मॉर्निंग में अगर कॉफी पिए और 12 बजे कॉफी पिए तो दोनों का इम्पैक्ट तो अलग आएगा. तो सेम सब्जेक्ट ग्रुप को अगर हम मॉर्निंग में भी दे, आफ्टरनून में भी दे, इवनिंग में भी दे और 5 mg भी दे, 10 mg भी दे, 15 mg भी दे और कॉफी विदाउट कैफीन भी दे, कंट्रोल ग्रुप भी रखें, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो गया. जो शुरू वाला था उसको रैंडमाइज ग्रुप डिजाइन कहते हैं. उसके बाद 5 mg 15 mg 10 mg और रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन. उसके बाद आप अगर उसको डे टाइम इवनिंग टाइम सेम को रिपीट करते हो हर एक का उस पे फुल लाइटिंग स्क्वायर डिजाइन. और उसके बाद आप अगर ये देखना चाहते हो कि कॉफी एंड सपोज एक एग्जांपल देते हैं, एक्सीडेंट का मेन कारण क्या है? कॉफी है या अल्कोहल है या दोनों का इंटरैक्शन है, तो हम फैक्टोरियल डिजाइन करेंगे. This is what is experimental design. बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं है. ठीक है? Experimental design या तो it can be a univariate design, it can be a bivariate design, it can be a multivariate design. Univariate design means where randomized Latin square design univariate है, bivariate है या multivariate है. आपने पढ़ा है कि नहीं? Latin square नहीं होगा तो रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन पढ़े हैं. तो ब्लॉक डिजाइन यूनिवेरिएट है, बाइवेरिएट है और मल्टीवेरिएट. बाइवेरिएट कैसे हो? बाइवेरिएट का मतलब दो वेरिएबल है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल. हां तुम्हारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन में. कॉफी तो है, कॉफी का टाइम भी तो है सर 3. वही हम पूछना चाह रहे थे. देखो नहीं, लैटिन स्क्वायर भी यूनिवेरिएट डिजाइन ही है. बाइवेरिएट डिजाइन में कम से कम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए. जब हम कहते हैं 2/3/4 इसका मतलब 3 फैक्टर डिजाइन है. फर्स्ट फैक्टर का 2 लेवल, सेकंड फैक्टर का 2 लेवल, थर्ड फैक्टर का 4 लेवल. लेवल और फैक्टर में कंफ्यूज मत करना. हम लोग हमेशा कंफ्यूज करते हैं लेवल और फैक्टर में. अगर हम कहते हैं 2/2 तो हमारे दो ही फैक्टर है. 2/3/2 तीन फैक्टर है, पर 2/3/2 तीन फैक्टर में फर्स्ट फैक्टर में 2 लेवल है, सेकंड फैक्टर में 3 लेवल है, थर्ड फैक्टर में 2 लेवल है. ये क्लियर है कि नहीं? तो यूनिवेरिएट माने सिंगल फैक्टर, रैंडमाइज ग्रुप, रैंडमाइज ब्लॉक, रैंडमाइज लैटिन स्क्वायर, these are all यूनिवेरिएट. मल्टीवेरिएट में जब हम मोर देन 2 वेरिएबल को यूज करते हैं तो मल्टीवेरिएट होता है. ठीक है? एंड बाइवेरिएट में जब हम 2 वेरिएबल को यूज करते हैं.
देखो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन अगर हम करें तो हमारे पास तीन तरह का एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी है। एक होता है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, जैसे ये प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, वन शॉट के नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तब हम आपको देखिए, ये देखिए प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, वन शॉट केस स्टडी, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट स्टडी एंड स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन स्टडी। इसको पढ़ के बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्सपेरिमेंटल नहीं डेफिनेटली आया होगा। You could answer everything to me. What does it mean, one shot case study? Treatment and then observation. Right after. ये क्या है पहले बताओ? Observation, the treatment control. and माने baseline नहीं है। पहले में baseline नहीं है, दूसरे में baseline है। बस हो गया। So why do you say that we don't know? And static group comparison? Static group माने We have two different. एक में treatment है, एक में नहीं है। एक में ट्रीटमेंट है, एक में ट्रीटमेंट नहीं है। हो गया। तो हमको सर दर्द कर रहा है, हमने पैरासीटामोल लिए, आउटकम देख लिए, ठीक है। हमको सर दर्द कर रहा है, हमने टेस्ट कर लिया है, फिर पैरासीटामोल दिए और उसके बाद टेस्ट कर लिया, तो हमारा वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट स्टडी हो गया। और हमको सर दर्द कर रहा है, हमने आउटकम मेजर ले लिए, और हमारे सर दर्द नहीं है पर हम एक कंट्रोल ग्रुप ले लिए, पर कंट्रोल ग्रुप में कोई बेसलाइन नहीं है, कंट्रोल इटसेल्फ इज अ बेस। ये none of these are called true experimental design. They are all experimental design, but none of them are true experimental design. Why? True experimental design में क्या होना चाहिए? दोनों कंडीशन में ट्रीटमेंट सेम होनी चाहिए। ओके, ये तो प्री एक्सपेरिमेंटल है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन देखो, ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन देखो। हाइपोथेसिस क्या है? ड्रग एक्स कॉजेज डिक्रीज इन एंजाइटी लेवल, ठीक है। और हमारे पास 600 पॉपुलेशन है, फर्स्ट 200 को हमने प्लेसिबो दे दिया, ठीक है। प्लेसिबो वाले कॉफी विदाउट कैफीन टाइप, प्लेसिबो और नोसिबो सुने हैं? नोसिबो नहीं सुने हैं ना? प्लेसिबो क्या है? प्लेसिबो सुने हैं, नोसिबो नहीं सुने। जैसे प्लेसिबो है, जैसे आपको सर दर्द कर रहा है, मैंने कहा आपको एक मेडिसिन में दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया, लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया डॉक्टर है, जाओ उनके पास, अपने आप ठीक हो जाओ, तो वो प्लेसिबो है, कुछ नहीं है। तो हम आपको मेडिसिन दिए, पर सर दर्द का मेडिसिन नहीं दिए, एक शुगर पिल दे दिए। अगर प्लेसिबो काम करता है तो शुगर पिल से आपका सर दर्द ठीक है। और नोसिबो ठीक उल्टा है, आपको सर दर्द कर रहा है, हमने आपको मेडिसिन दिए और उसके बाद आपको लगा कि सर दर्द और तेज है, तो आप ट्रू एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको प्लेसिबो की तरफ से देखना पड़ेगा, नोसिबो की तरफ से भी देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वैक्सीन रिसर्च में हो रहा है ये सब, ये जो वैक्सीन आपको वैक्सीन कोविशील्ड क्या ये इसमें सब कर रहे हैं, दे आर ऑल डूइंग ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर। तो इसमें देखो 600 लोग दिए हैं, तो हम देखना क्या चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर ड्रग से एंजाइटी लेवल कम होती है, तो 200 को हमने कंट्रोल ग्रुप विद प्लेसिबो दिए, 200 को 100 mg दिए और 200 को हम 250 mg दिए। और जो कंट्रोल ग्रुप है प्लेसिबो के बाद हमने पाया 200 में से 10 क्योर हुए। जो हमारा 200 ये सेकंड ग्रुप है, 100 mg के बाद हमने पाया 200 में 90 क्योर हुए। और ये जो थर्ड ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जिसको हम 250 mg दिए, तो 200 में से 190 ठीक हो गए। ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के जो कैरेक्टरिस्टिक है
कि सैंपल आप इंडिपेंडेंटली कलेक्ट करते, इंडिपेंडेंट सैम्पलिंग, यू रैंडमनेस, यू अंडरस्टैंड रैंडमनेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? Each and Each and every every unit has a chance of equal chance to be appear in the sample, and selection of one sample will not affect the selection of the second sample. तो ये true randomness होनी चाहिए, जैसे I mean you can call it as independence, इसके test of independence भी हम लोग कहते हैं, और at the same time experimental का जो finding है वो third party evaluation होनी चाहिए. That is, आप रिसर्च करते हो, आप डेटा को तो वैसे ही रीड करना चाहते हो जैसे आपका हाइपोथेसिस है. So instead we do not interpret the result what it actually is, we interpret the result the way we want to perceive it. It's a researcher bias. जब हम randomized control trial करते हैं तो एक्सपेरिमेंटर को भी पता नहीं चलता है कि एक्चुअल ड्रग किसको दिया है, एक्सपेरिमेंटर को भी पता नहीं चलता है who is the person. ठीक है, इसे कहते हैं RCT. RCT सुने हैं ना आप लोग? रैंडमाइज कंट्रोल ट्रीटमेंट जो है किसी भी मेडिसिन रिसर्च में RCT किया जाता है. तो RCT का मतलब अगर ट्रीटमेंट का इफेक्ट आपको रियली देखना है तो यू हैव टू फॉलो ए RCT मेथड. बिना RCT के मेथड के कोई भी मेडिसिन काम नहीं करता, बिकॉज हर एक मेडिसिन का एक कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है. हम अगर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल लेके चले तो मेडिसिन रिसर्च विल नॉट वर्क, ओनली RCT के थ्रू इट वर्क. सपोज आप 0.05 सिग्निफिकेंट बताते हो ना, 0.05 मतलब क्या हुआ? 0.05 हाँ पढ़े. When the same research will be repeated, there is a 95% chance that we'll get the same result. ओके, सपोज मैंने एक मेडिसिन निकाला और उसमें हमने लिख दिया कि इस मेडिसिन को खाओगे तो 95% पीपल ठीक हो जाएंगे, 5 लोग मरेंगे. कोई नहीं खाएगा ना. तो हमें RCT करके प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं ये 0.0001 पे सिग्निफिकेंट है. इसलिए देखो एंटीबायोटिक पे लिखा रहता है pregnant women can take it and there are incidences of contraindication 1:1 lakh लिखा रहता है. Yes. वो ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट करके ही लिखा जाता है, RCT करके लिखा जाता है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी करके. पर हम लोग साइकोलॉजी में, सोशल साइंसेस में ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कम करते हैं. ठीक है, हम लोग जो करते हैं ज्यादातर क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं. ये पढ़ के कोई समझा दे मेरे को क्या हो रहा है. तो ये फोटो देख के बता दो वो क्या रहा है. गाजर जानते हो ना क्या है? सर वो दोनों जो है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हाइपोथेसिस है. हाइपोथेसिस में बता दूं, गाजर खाने से सनग्लास नहीं पहनना, आपको ग्लासेस नहीं पहनने पड़ेंगे. ठीक है, गाजर इज गुड, इसमें रोडोप्सिन है, कैरोटीन है, इज गुड फॉर आइज. हम इसे टेस्ट करना चाहते हैं और हम क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किए. कैसे किए कि जो ये दोनों बच्चे देखो, दे one of them they are taking gajar, okay, none of them are wearing glasses, but ये बच्चा जो है गाजर नहीं खाएगा और देखो अल्टीमेटली इसको जो है ग्लास पड़ना. तो ये जो डिवीजन हमने किया है वो एक्सपेरिमेंटली हमने डिवाइड नहीं किया दोनों ग्रुप को, और एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव करना चाहते हैं गाजर का इम्पैक्ट जो है आईसाइट पे है. तो जो स्ट्रैटिफिकेशन हमने किया है चश्मे के बेसिस पे की. दूसरा वाला देख के बताओ. Group that was relaxed, nobody has to wear glasses.
Okay. Group that was not relaxed, one of them has to wear gloves. Okay. तो स्ट्रेस का इम्पैक्ट आईसाइट पे है कि नहीं, हम इसे स्टडी करना चाहते हैं. तो स्ट्रेस हमारे लिए स्ट्रेसफुल बच्चे, जो स्ट्रेस हम कैसे भी आप चाहो तो उसको ग्रुप कर लो. जो बच्चा 5 किलो लेके चलता है, जो बच्चा 500 ग्राम लेके, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि खाली एक कॉपी लेके स्कूल जाते हैं, कुछ ऐसे काफी कुछ बस्ता लेके स्कूल भी जाते हैं. तो सब स्ट्रेस्ड है, ठीक है. अब वो स्ट्रेस्ड है तो आईसाइट पे उसका असर पड़ता है. तो given you just examples. These examples are psychological studies में हम ज़्यादातर quasi experimental research करते हैं, जिसमें कि independent variable को we try to divide it artificially. जब आप artificially divide करते हो और उसके बाद independent variable का impact dependent variable पे देखते हो, तब जाके वो quasi experimental, quasi means similar but not डायरेक्ट कंट्रोल. अगर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है तो ट्रू एक्सपेरिमेंट नहीं बन सकता. यू शुड बी एबल टू मैनिपुलेट इट डायरेक्टली एंड यू शुड हैव ए थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन, तब जाके इट कैन बी ए ट्रू एक्सपेरिमेंट. एनीवे, देयर आर सो मेनी अदर केस स्टडी मेथड. ये तो आप सभी लोग जानते हो. हाँ, So what inferences you can make from a nocebo result? Yeah, that whether your attitude has an impact on real pharmacological effect on your brain. जो प्लेसिबो स्टडीज है ना, ये जो मैग्नेट है ना, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसके ऊपर स्टडी करके देखा गया है कि जो प्लेसिबो ग्रुप है ना, सपोज यू हैव हेडेक एंड यू हैव बीन गिवन मेडिसिन, रियल मेडिसिन, तो what kind of chemicals are being released? Okay. And if I get placebo, I also get that chemical released, but not to that extent. So it means placebo has got some impact, and those who did not get a medicine will not get any chemical released. Okay. Nocebo में क्या है? You will find that you have given medicine, but that chemical is not been released. It means your attitude. That's the reason morning में हम लोग discuss नहीं कर रहे थे. Cancer में your immune system depends to a great extent by your, you said no this, what is that cognition of illness cognition. So the impact of this research, nocebo. Some people don't believe. आप बोलो कि कोई problem नहीं है, they will say I gave you this example of brain tumor. Okay, he will not believe that he doesn't have brain tumor. So these people are people with nocebo impact. कुछ भी करो nocebo. और उल्टा ग्रुप है placebo. They are suggestible group. So suggestible group are more susceptible to placebo. Resistant group are more susceptible to nocebo. आप लिटरेचर खोल के देखो, कहीं आपको गूगल सर्च करके देखो, कहीं कुछ नहीं मिलता है. But these are some of the things we must study. We must study कि impact of placebo and nocebo on pharmacology. और मान लो any drug, pain relieving drug बोलो, arthritis बोलो, psychosomatic diseases में बोलो, I mean हम लोग clinical group माने तो psychiatric group पे ज़्यादातर काम करते हैं, पर non psychiatric group में भी हम लोग कम काम करते हैं. So you can study all those things and you can see the experimental findings on placebo and nocebo. You can study both. केस स्टडी, एक एग्जांपल देखो. केस स्टडी हम लोग रिसेंट उससे ले सकते हैं. आई डोंट नो दैट इज देयर द कोरिलेशनल डिजाइन. अच्छा, केस स्टडी. अभी जो ब्लैक लाइव्स मैटर इज अ केस स्टडी. ओके, अभी जो वैक्सीन हेजिटेंसी is a case study. But जब हम case study करते हैं, why do we do case study?
case study, what is the fundamental purpose of doing a case study? जब आपको एक यूनिक सोशल फिनोमेनन दिखता है, इस तरह का सोशल फिनोमेनन हम लोग कभी आगे पहले देखे नहीं। वैक्सीन रेजिस्टेंसी का जो स्टडीज देखो अभी कनाडा में हुए, अभी ऑस्ट्रेलिया में हुए, अभी न्यूजीलैंड में हो रहा है, ये सब क्या है? बेसिकली hesitancy may be there, but why there is a public repercussion? तो this public repercussion का जो generalization है, वो case study से possible. Even Black Lives Matter में possible है. तो social scientist तो policy को ऐसे ही ना influence करेगा. Social scientist should tell that, well, look, you may think it is very trivial, but it will impact the society in such a big way. So I think I mean case studies we generally do with a unique social phenomenon. Unique social, एक आध कोई और unique social phenomenon आप बताइए। हमारे देश में तो वैक्सीन hesitancy नहीं है. We do not have that much of education. So why there is a vaccine hesitancy in other countries? So these are, I mean, I do not have any answer. हम आपको पूछ नहीं रहे हैं, हम आपसे ये बता रहे हैं, these are unique social phenomena जो हमें study करनी चाहिए. और ऐसा भी नहीं है, whatever I am trying to motivate you, you don't need to see everything from the prism of your own thesis topic. My idea is to take you beyond your thesis. तब जाके आप successful बन पाओगे. If you only look everything at through the prism of your own thesis title or topic, it will be very difficult to find a job. Very difficult. Please open up your eyes. See how researches are being done. Make sure that you can bring transdisciplinarity in your thought process. That is, with the help of your own sciences, how you can broaden the perspective of other sciences. The entire artificial intelligence is based on cognitive science, and the entire cognitive science is based on simply general psychology. It's nothing more than sensation, perception, attention, memory, learning, problem solving, decision making. Nothing more than that. So, question ये है कि if you think that, well, we must restrict ourselves to only the kind of research I have been doing, then it would be very difficult to bring plasticity in your thought process. Plasticity in the thought process is very important to face the challenges of the growing, intellectual masses that we are getting. In the process, India as a country, every year we produce 47,000 PhDs. That's why I say 47,000 PhDs. So it's just a glamour we are chasing of writing against our name PhD. 98.9% theses are found only in the library. You even don't read your own thesis second time after you are awarded. Isn't it? So, if you have spent 4 years, time, energy and money, just give your own money, your parents' money, your money only, then there must be a return on investment. What is the return you are getting out of it? Therefore, important ये है कि आप अपना perspective को broaden करो. Don't restrict yourself to your thesis topic. That doesn't help you. It doesn't help you at all. Any country in the world wants diversification because cross-fertilization, genetics rule में brings better breed. Incestual relationship is therefore forbidden in the society. It doesn't help.
So just don't remain on your own topic and on your own methodologies. Well, correlational design में एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे quickly. I'll leave everything to you. रात को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? कल हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे. Why correlation is not causation? Many of us don't understand this. जैसे समर टाइम में क्या है कि we get more throat infection. Why? If I want to study summer, during summer we get more throat infection. Why don't we get it in winter? Because we don't consume a lot of cold water. आइसक्रीम ले लेते हैं तो समर में ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं. तो the correlation between summer and throat infection is very high. But why? It's because of ice cream. No. Height and weight के बीच में correlation very high. Height बढ़ता है तो weight also increases, but actual correlation is zero because age is a factor which impacts height as well as weight. Age को निकाल दो, you will find no correlation between height and weight. So a lot of correlations that we do are only exploratory in nature. We try to see the kind of relationship. That doesn't tell you causation. Causation and correlation are two different things. मैंने कोई example दिया देखो. Relationship. Those who smoke also drink is a correlation. Okay. But smoking has proven to cause lung cancer. So causation is that if you go by correlation, then you will find that there is a high correlation between these two. But if you want to see the causative factor, then smoking causes lung cancer is a causative research. But correlational research is a different kind of research than causation research. So आपको देखना पड़ेगा in your research whether you are trying to find out causation or correlation. Causation, if you are doing, you will follow a experimental design. Correlation, if you are doing, you can follow a correlational design. You can follow a partial correlation design. You can follow partial and semi-partial correlational design. रात को आप लोग पढ़ लीजिएगा इसे, ठीक है? So these are all correlational design. You can do a multiple correlational design. So these are all correlational design. I'm sorry, case study का example इधर आ गया. एक case study ये जो lockdown announcement होने के बाद lot of people they walked up to 500 kilometers. This is collective whispering. This is mob hysteria. So as a social scientist, we don't need to see topics, choose topics. Tomorrow I will also discuss how to select topic. We should not see topics based only on logistics. हमारा topics ऐसे ही होता है based on logistics. Available क्या क्या है? हम data कहाँ से लेंगे? हमारे पास tool क्या क्या available है? So a lot of researches should not be only dependent upon the availability of logistics. Many tactical research can overcome the shortcomings of the logistic research. So I think being a social scientist, we should be able to understand the phenomenon of such kind of societal article. So ये दोनों slide अलग हो गया actually case study के साथ, okay? तो ये actually experimental study के slide से पहले जो slide मैंने दिखाया तो basically case study उसके बाद ये था, इसी को मैं ढूंढा. Case study Black Lives Matter is a case study, okay? And if you try to study the dynamics, you can study that. You don't need to study it actually going to America and study it. You can do content analysis. You can do
you can collect your sample from secondary sources. You can collect sample from I mean from tertiary sources. I remember, not in my studies, one of our IIT students, he was interested with my left-handed research, but he wanted to know whether 10,000 years back we were left-handed or not, or right-handed or not, because 94% of the people are right-handed. So he went to various museums, trying to see whether God and Goddess, they are using sword in which hand and shield in which hand. What kind of relics are available in the temples. These are all secondary sources, and they have done good researches. So I think we can do a lot of case studies, but the problem is that if the criteria for selecting a case hit is because it represents a very unusual, unique phenomenon problem for study, then findings can apply only to that case. In case study, we generally do not generalize, because case study's purpose is to only describe that case. That's why it is an observational study. It is not an explanatory study. शुरू में हमने कहा ना कि survey design, case study, these are all observational study. सर थ्योरी जनरेशन में तो कर सकते हैं. Case study. Yes sir. देखो केस स्टडी के बेस पे थ्योरी नहीं करते हैं जनरली. Yes. क्योंकि थ्योरी डेवलप करने के लिए ना you should have multiple empirical evidence behind it. Yes. And generally case study में we try to limit our inferences within the purview of that case. We don't go beyond. Generally, we don't do that. Historical design. ये भी social sciences का एक design है. What kind of culture we had prehistorically? You can do it through historical design. Lot of people have been doing researches. I said through museum. That's why I gave you this example. They are studying historical and social scientists and psychologists are doing these studies. What kind of rituals are there at what point of time? Based on handwriting, based on type of depiction made. I mean, there are lot of such researches are there, but historical research हम लोग कोई नहीं करते. But social sciences में historical research is one of the most prevalent method of historical research. Action research. The water wheel is action research. Morning we discussed about the water wheel. That's an action research. So this is also a design. Action research. Action research. We discussed about it. This water wheel is an action. We discussed all about this in the morning. Action research. इसको कहते हैं प्रोजेक्ट साथी. Ethnographic research. Anybody is doing ethnographic research? None of you. You are doing. क्या कर रहे हो बेटा? बैठो बैठो बैठो. मैंने कोई तुमने डिजाइन किया है? अभी सर मेरा टॉपिक है सर इतने कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान. तो एक्चुअली मैं वहाँ सर से अपनी सलाह ले रहा हूँ कि कैसे मुझे करना है. Ethnic conflict and ethnography are two different things. Ethnic conflict is a different thing. You are talking about Baluch. Yes. I understand. But ethnographic study and is a methodology. But ethnic conflict, ethnicity is your group. You are doing quasi-experimental research. Okay. But ethnography, आप जैसे मान लो निकोबार में एक जारवा नाम के एक ट्राइबल ग्रुप है, सुने हो? तो people go there to do ethnographic study. You become part of that sample. आप उनके साथ घुल मिल जाते हो, पार्टिसिपेट करते हो, उनके रिचुअल्स पे रहते हो और डेटा कलेक्ट करते हो. और ऐसा भी नहीं है कि डिसेप्टिवली यू डू इट.
Some people try to do it deceptively and they are rudely beaten, and some people are killed even. The government of India has banned actually doing such kind of research. Government of India को ban करना पड़ा वो research. आप सब लोग जानते हो. I'm very happy that you know about it. So ethnographic research is a very difficult kind of research. You have to admit that I am come here to do research with you. So you accept me. वो acceptance बड़ा important होता है. और वो accept करके you become party to that group, mostly a tribal group, and then you do it. Difficult Here step. also we did the Tamam Mela. There was a team from UK long time back, Nick Hopkins and Steve Wright directed. Okay. So there somebody they were staying with that people. हाँ ये रहना पड़ता है. Kalpasis. Okay. कब की बात है ये? This was around home, I think it was in 2013. I was also part of it. I was not part of the ethnographic group, but 2007 onwards, we did 2006-7 onwards. So that team, it was an ESRC project, and Professor Pandey was here from this side, and Stephen Riker and Nick Hopkins, they're from Dundee. So DEE, no? yes. Yeah, I remember that. Yes. So, I remember that. So we were staying in the Magmela. I made all the arrangements, and the people of this team. Barry was also. No, Barry was not. Barry was not. Ruben was not there. Barry, I did with Barry. That was on territoriality and Hindu Muslim. That was Okay. No. This was the recent one. Recent in sense that after 2013-14. So there were about 5-6 of them. Okay. So their religious beliefs, rituals, and morning rituals. Everybody's getting up with them, the Kalpasis. So we did stay there, land some river valleys. Very difficult kind of studies. I found in, I mean, I heard about it. An Indian actually is doing research on that third gender, and he's a genetician. And through genetic coding, he found that we have got 5 genders. And he is doing genetics with ethnography. अब देखो research का कोई boundary नहीं. I mean, लोग कैसे मिलाते हैं? Genetics with ethnographic study. ये जो 4th and 5th category के लोग हैं, what kind of people are they? I mean, The queer ones and all that. LGBT तो एक थर्ड जेंडर है, पर एक फोर्थ जेंडर जिसमें हाई मैस्कुलिनिटी लो फेमिनिटी इन वुमेन Andro. हाँ वही एंड्रोजेनी है. बट वो बेसिकली देखिए एंड्रोजेनी इज मोर ऑन टेम्परामेंटल Gender and all those classes. और ये जेनेटिक्स के साथ Genetics. यूके में एक इंडियन लड़का कर रहा है. आई मीन हार्डली 27-28 साल का है जेनेटिक्स में. He became a professor in Cambridge. Assistant professor in Cambridge, because of the ingenuity of the kind of research. Yes. I mean, whatever you find is immaterial. कोई पूछता नहीं है आपने पाया क्या, पर आपके रिसर्च में वो सरप्राइज एलिमेंट है. और आपने ये साबित किया इस रिसर्च को करने से पहले कि ये दोनों जो वेरिएबल है इम्पार्सिमोनियस नहीं है. इम्पार्सिमोनियस माने क्या है? टेस्टेबल रिलेशनशिप. जैसे हम आई कलर एंड इंटेलिजेंस का रिसर्च नहीं कर रहे. अगर हम आई कलर एंड इंटेलिजेंस का या स्किन कलर एंड इंटेलिजेंस का रिसर्च करना चाहें, एक बार लेफ्ट हैंडेड निशांति तुम जो रहे वो दामोदर के साथ एक काम हम लोग कर रहे थे ना कि लेफ्ट हैंडर्स कमिट मोर एक्सीडेंट्स. तो उसमें क्या हुआ, हम लोग तो कर लिया, हमारे देश में कोई कुछ नहीं किया. तो हमारे कुछ कलीग्स जो है उसको साइकोलॉजिकल बुलेटिन में पब्लिश कर दी कि लेफ्ट हैंडर्स डाई अर्ली. और सच्ची में लेफ्ट हैंडर्स डाई अर्ली. उसका कारण यही है कोरेन एंड पोराक्रा. तुम थे उस समय इसलिए मैंने तुमको. तो उस स्टडी में क्या है कि एक्चुअली लेफ्ट हैंडर्स डाई अर्ली नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, बिकॉज इट्स ए राइट फिट वर्ड. मान लो आप अगर लेफ्ट फुटर हो और आप स्कूटर चला रहे हो तो आपका ब्रेक तो राइट साइड में है ना. आप टेलर हो, कैंची तो लेफ्ट हैंडर के लिए बनता नहीं है और चला भी नहीं पाओगे. आप ड्राइविंग करते हो, गियर हमेशा आपका लेफ्ट साइड में रहता है.
आप अगर लेफ्ट हैंडर हो तो नेचुरली भाई आप तो व्हाई डू दे कमिट एक्सीडेंट? बिकॉज वी ऑल लिव इन राइट फिट वर्ल्ड। लेफ्ट हैंडर्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, तो आइदर दे मॉडिफाई और दे एलिमिनेट, आइदर दे आर एलिमिनेटेड। मगर प्रॉब्लम ये हुआ इस रिसर्च को पब्लिश करने, बड़ा अच्छा फाइंडिंग था, रिसर्च को तो पब्लिश कर दिए, पर बहुत मारपीट हुए इसके बाद क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी लेफ्ट हैंडर्स का प्रीमियम बढ़ा दी। दे हैव इंक्रीज्ड द प्रीमियम ऑफ लेफ्ट हैंडर्स, और बड़ा मारपीट हुआ इसमें, तो रिसर्च का पेपर को ही विड्रॉ करना पड़ा। बोले नहीं आप सब गलत बता दिए। तो समझ रहे हो रिसर्च में ना एक खाली सरप्राइज एलिमेंट रहने से नहीं होगा, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी कितना होता है। यूनाइटेड स्टेट्स में होल बॉडी स्कैनर बना दिए, $2 बिलियन खर्च हुआ एयरपोर्ट में इंस्टॉल करने के लिए, $2 बिलियन। पर एयरपोर्ट में जब इनको इंस्टॉल किए तो एशियन कंट्री में सब वुमेन बता दिए हम टिकट आपको वापस कर दे रहे हैं, मेरे को छोड़ दो, मैं जाऊंगा नहीं इसके टिकट। पूरे टेक्नोलॉजी फेल हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी को सोसाइटी के साथ जोड़ना पड़ेगा। इसे कहते हैं एंड यूजर इंटीग्रेशन रिसर्च। मैंने कहा ना एंड यूजर इंटीग्रेशन रिसर्च। तो खाली आपको सरप्राइज एलिमेंट देखने से नहीं होगा, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। चलो ये सब रात को पढ़ लेना। फोकस ग्रुप डिस्कशन आई डोंट वांट टू डिस्कस। आप लोग करते हो ना फोकस ग्रुप डिस्कशन? Yes, sir. पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल भी करते हो? ओके। अब बताओ कि so many designs are there ना, फिजिकल साइंसेस में, लाइफ साइंसेस में we use only one design, social sciences में we use varieties of designs, so many designs। अभी डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का रिसर्च कर रहे हो। तो प्रॉब्लम ये है कि आवर रिसर्च इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, नॉट कंटेंट डिपेंडेंट। देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू चूज द राइट काइंड ऑफ डिजाइन। ठीक है, आई थिंक वी हैव पोस्ट लॉट ऑफ मटेरियल, यू ऑल नो दिस। ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं जानते हो। आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग ऑल दिस in one platform so that you can think constructively, go beyond your topic. My only idea is to take you beyond your topic. Tomorrow we will discuss more about it and whatever you would like me to discuss. So tomorrow maybe we can discuss about how to develop an idea of research, how to go beyond our own topic and relate it then to our topic. First you have to go out and then only you can relate it. If you don't go out, you will not be able to relate. Okay? Any other question? Go ahead. So in the morning session, you mentioned that in postdoctoral researches, we introduce an unknown third variable in the study. So can you just give an example of that? देखो अननोन थर्ड वेरिएबल लाइक ये जो कैम्ब्रिज का ये लड़का है इंडिया, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जेनेटिक स्टडी में ही फाउंड ट्रांसजेंडर पे स्टडी कर रहा, he found the genetic composition, I mean उसे क्या कहते हैं, वो जो जीनोम की स्टडी में he found that there are 5 different sequences they can actually identify. तो अब जेनेटिक्स के साथ जेंडर, देखो the biological definition of gender is sex differentiation and psychological differentiation is gender. The question here उठता है कि how can I bring a new idea on the existing idea? Existing idea पे new idea हम क्या ला सकते हैं? तो we have given so many such examples कि जैसे मान लो ये जो स्टैम्पिड का एग्जाम्पल दिया, स्टैम्पिड में मैक्सिमम हम लोग हार्ट फेलियर देखते हैं, उसका कारण क्या है? तो थर्ड वेरिएबल ये आया
कि आप किस हाथ को यूज करते हो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये पाया गया है। फिर but if you can give your own topic, I can give you a third variable. Anybody? कोई एक टॉपिक बताओ जो आप करते हो, हम थर्ड वेरिएबल ऐड कर देंगे उसके साथ। कोई अपना टॉपिक नहीं बनाया। मेरा टॉपिक है हेल्थ बिलीफ एंड कोपिंग विद डायबिटीज मेलाइटिस, मैंने कंप्लीट कर लिया। हेल्थ बिलीफ एंड कोपिंग विद डायबिटीज मेलाइटिस। coping has become a repetitive. If I have to do research, I will say belief is a thinking error. Yes. Belief is a Thinking error. Yes sir. इस पे हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो I want to know the biology of belief. Why beliefs develop? Yes. Okay. Have you heard the name of Martin Seligman? Yes. Yes sir. Martin Seligman is a person. He is in University of Pennsylvania. He is doing a research on primal belief. वो कहते हैं, क्योंकि I met him several times, इसलिए मैं बता रहा हूँ. He says that देखो मानस, with our birth we get good and bad. So दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं. Either they see things good or they see things bad. Why? Because of their primal belief. This is an evolutionary mechanism. तो अब देखो थर्ड वेरिएबल में बिलीफ में, if you think belief, I would say biology of belief. आज रात को एक किताब और देख लेना, ब्रूस लिप्टन, very good. ब्रूस लिप्टन का किताब आप सब लोग एक बार पढ़ लो, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। हम लोग बिलीव करते हैं गॉड ऊपर है और डेमन नीचे है। अरे हेल और हेवन किसी ने नहीं देखा, पर अगर हम 100 साल जीते हैं तो 100 साल वही मान के चलते हैं, ऊपर गॉड है और नीचे हेल है, ऊपर हेवन नीचे हेल। इसलिए टार्की में एक जगह है, डोर ऑफ हेल, जानते हो ना, टार्की में जगह है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि बिलीफ को लेकर अगर हम कोई अनयूजुअल स्टडी करना चाहें तो ब्रूस लिप्टन तो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, इज अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, और इन्होंने प्रूव किया कि आपके परसेप्शन पे बिलीफ डिपेंड करता है और आपके बिलीफ पे जीन का एक्सप्रेशन होता है। इन्होंने प्रूव किया है। तो आपका जो जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, आपको जो साइकोसोमैटिक डिजीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ योर बिलीफ। यू गेट अ हार्ट डिजीज बिकॉज ऑफ योर बिलीफ। इफ यू हैव गॉट नेगेटिव बिलीफ, द 4 vital organs which are affected is brain, heart, kidney and liver. If you have got positive belief, you actually put nourishment to these all 4 vital organs. So why not we add a different discipline into our existing discipline? Then it becomes a postdoctoral. Anything else? You can sum up today. It has been a long day for you, and you arrived in the middle of the night. ठीक है, अब तो काल इनका दिन होगा, tomorrow they will speak. Okay, sure. I think we need to stop here. Thank you. Sir, I would, on behalf of the participants and the department, I'd like to thank you for today's session. And it was very useful, very informative, and we look forward to tomorrow's session. Sure, but tomorrow is your session, huh? You all will speak. Your means you all will speak.